नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इट सेज a small copper ball of 5 millimeter diameter. Dia is 5 millimeter. पढ़ लेते हैं एक बार. At 500 Kelvin is dropped into an oil bath. So it seems that this is a lumped capacity problem whose temperature is 300 Kelvin. The thermal conductivity data is given, density is given, specific heat is 385. That is also given. Heat transfer coefficient is given. All the units are standard units except the diameter. And it is mentioned that the lumped heat analysis is assumed to be valid. Okay. The rate of fall of the temperature of the ball means they are asking us dt by dt. Temperature of the ball at the beginning of the cooling means at time t is equal to 0. What is this value? This has been asked. So let us have a look on the expression of lumped heat capacity system, that is T minus T infinity by Ti minus T infinity is equal to e raised to the power minus bt. I think this was the expression. D is HA by rho CPV. If you differentiate this expression with respect to time, correct. What is the differentiation of e raised to power minus bt? It is e raised to power minus bt divided by minus b. They are asking us dt by dt. You know, dt by dt or d of t minus t infinity by dt, they are same because t infinity is constant. But this has to be multiplied. So d of t by dt will be same as, don't worry about this, t infinity difference है. जो t minus t infinity का rate होगा with respect to time, the same will be for t with respect to time. So that is equal to ti minus t infinity is equal to multiplied by e raised to power minus bt divided by minus b, and they are asking us at time t is equal to 0. So this has to be 0. T is 0, so that becomes equal to 1. So if you put t is equal to 0, this expression becomes t minus t infinity, ti minus t infinity in fact, divided by b, correct? Now minus b in fact, right? What was the value of b? If you remember the expression, it was, I think, rho CPV by HA or HA by rho CPV. The value of b was this was rho CPV by h into a, I think, yeah. So rho CPV by h into a. So this must be Ti minus T infinity, which was 200 in this case, into rho CPV by HA. So that becomes HA by rho CP into V. I think that is correct expression with a negative sign. However, we have to report a change, so all the options are positive, are taken as positive. Okay, so if you see this these values, you can put the values as minus 200 into h. H value is given as 250, I guess. The value of h, let me check. This is the value of h is 250. So that is 250. Into volume by area will be r by 3, so that is 3, and r, what is r? 2.5 into 10 to the power minus 3, that was the value of r. Volume by area becomes r by 3, the characteristic dimension rho is 9000, and Cp is 385. All the units are fine now. Okay, if you see here, the directly 10 to the power minus 3 and this 9000, 3 zeros, they are going to be cancelled. This small calculation you should do directly. So 200 multiplied by 250 multiplied by 3 divided by 9 multiplied by, okay, and 385, 2.5. It is coming out to be 17.3, and that is option C, right? 17.3. That is the initial rate of change with a negative sign, of course, because the temperature is going to decrease. So, agar negative sign bhi hota hai yahan pe, then that could be the more appropriate answer. But because there is no negative sign, so 17.3 is the final answer. Right, that was the 9th question. Slightly different only. देखो थोड़ी चीजें बदल के नए क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, उतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं, नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आएगा इसमें, वही कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, छोटी गड़बड़ करके आओगे बस. Let us see the 10th question. Again, it is based on the lumped heat capacity, I guess. The question says that the average heat transfer coefficient on a thin hot vertical plate suspended in still air. So there is a hot plate which is suspended. Suppose you have some kind of cord. By using that cord or string, you have a hot plate suspended in
Still air. Still air, the air is not moving. If air is moving, then you know what is going to happen. The heat transfer coefficient will be affected. In that case, either some correlation or directly the value of heat transfer coefficient should be provided. Can be determined from observing the heat transfer coefficient can be determined from observing the change in plate temperature with time in second as it cools. Okay, assume the plate temperature to be uniform at any instant of time. Means the plate temperature is uniform at an instant of time means high thermal conductivity. We are talking about lumped heat capacity analysis. And the radiation heat exchange with the surroundings is negligible. The ambient temperature is 25 degrees Celsius. T infinity is equal to 25 degrees Celsius. Okay? The plate has a total surface area. The plate has a total surface area of 0.1 meter square. So area is equal to 0.1 meter square. And a mass of 4 kg. Mass is also given. Okay, the mass of is 4 kg. The word total has been used here. So आप इस एरिया को फिर अब जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई मत करो. अब आपको सोचना ही नहीं है whether the sides are playing role in heat transfer or not. Only these sides are playing roles and edges are not playing. I don't know. The only thing the question clearly says that the total heat transfer area is 0.1 meter square and mass is this. The specific heat of the plate material is 2.5 kilojoules. 2.5 kilojoules, fine. Specific heat Cp is equal to 2.5 kilojoules per kg per Kelvin, correct? Okay, the convective heat transfer coefficient in watt per meter square at the instant when the plate temperature is 225 degrees Celsius and the change in plate temperature with the time, okay, means they are asking the value of H. ये H फाइंड करने का क्वेश्चन है. मैं इसको कन्वेक्शन में भी ले सकता था, बट इट इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर. And in unsteady state heat transfer, we have the role of both conduction and convection. That is why we are discussing here this problem. So that is, if you write the balance, then minus HA, let plate temperature is T, fine, and 25, correct? Don't ask me, sir, why this is in Celsius, this is in Kelvin, doesn't matter. It's equal to d by dt, mCp, what is m? 4. Correct? A is also given to us. Okay. What is Cp? 2.5 kilojoules, right? Cp is 2.5 kilojoules per kg per Kelvin. M is in kg. Fine. Okay. What is the value of H? H we have to find, right? But we have to find H in watt. Now you have to be very careful here. I'll tell you why. Because this Cp is in kilojoules, right? If this is in kilojoule, rest everything is fine. So probably you should get H in kilowatts. Okay, let's see. So M into Cp. Cp is 2.5. I'm just writing 2.5 kilojoule per kg per Kelvin. mCp and temperature is T. dt by dt. Okay. So at this point of time, they want to know the value of H. So minus H into 0.1. They are saying that at this instant, I told you that these are instantaneous balances. So at this instant, when the plate temperature is 225 degrees Celsius, 225 minus 25 is equal to 4 into 2.5, and the change in plate temperature with time dt by dt is minus 0.02. That is minus 0.02 Kelvin per second. Now please note that the unit of this is kg, this is kilojoule per kg per Kelvin. So the answer will be kilojoule per second. Fine, kilojoule per second, and that will be per degree Celsius. It means your H will be in kilowatts. They want your answer in watt. तो ये last का जो step है वो conversion बहुत जरूरी है. ये बहुत important mistake है यहाँ पे इस problem में जो बच्चे करके आएंगे, वो किलोजूल को किलोजूल ही रहने देंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसी को watt बोल देंगे. ठीक है? So that is H. Negative sign will be cancelled. H is equal to, this is 200, right? 200 into 0.1, that becomes 20. 200 into 0.1, 20, right? So H is equal to 4 into 2.5, that is 10, and multiplied by 0.02, that divided by 20, correct? Yeah. So H is equal to 0.01, that will be kilowatt per kilowatt. Okay, it is already kilowatt, right? Per meter square, because that is 0.1 meter square, right? That is the value of, when you write degree Celsius or degree Kelvin, doesn't matter. The value of H will be equal to 10. H will be
10 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या, है ना? आप चेक कर लो बैलेंस, दैट्स जस्ट आई रोट द बैलेंस। आप इसको अनस्टेडी स्टेट का समझो या कन्वेक्शन का समझो, इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कंसिडर दिस प्रॉब्लम इन अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। डजंट मैटर, केयर कॉन्सेप्ट है और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, सो यू वोंट फील डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना, उसने साफ साफ बोला है टोटल एरिया, टोटल का मतलब टोटल ही होता है, आपको और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, ओके okay, that was the problem number 10. Now the problem number 11. Okay. A material P of thickness 1 millimeter is sandwiched. तो material P है, ठीक है, इसके thickness है 1 millimeter. 1 millimeter thickness material P is sandwiched. Sandwiched मतलब दो चीजों के बीच में, ठीक है, between 2 steel slabs. एक स्लैब इधर भी है, ठीक, this is your material P and you have one slab here. ठीक, a heat flux 10 kilowatt per meter square is supplied to one of the steel slabs as shown. ठीक है, एक स्टील स्लैब को 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर का हीट फ्लक्स सप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ सम सोर्स. द बाउंड्री टेम्परेचर्स ऑफ द स्लैब आर इंडिकेटेड इन द फिगर. Okay, the boundary temperature of the slabs are indicated in the figure. So Q is supplied like this, 10 in this direction. The Q is being supplied. Q is equal to 10 kilowatt per meter square. What are the boundary temperature? This temperature, this surface is maintained at 500 Kelvin. The left surface is maintained at 500 Kelvin. ठीक है, the right surface is maintained at 360 Kelvin. Okay, steel slab. Fine. This length is 20. I guess should be in millimeters. And this is also 20. Yeah, all dimensions are in millimeter. It is given. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे दी है. Let's see. What do we have? Assume thermal conductivity of the steel is 10. Means K is equal to 10. Same material है तो यहाँ भी K is equal to 10. Fine. Considering one dimensional steady state heat conduction for the configuration, the thermal conductivity of the material P. देखो, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस है at steady state, if there are no generation at all, K is also not a function of time, everything is normal here, right? Q should be same at every location. So if this flux is supplied here, Q is 10 kilowatt per meter square, this should be 10 kilowatt per meter square everywhere. What is the unit of K? K is watt per meter. यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना, watt per meter per Kelvin. And these dimensions are in millimeters. So I have to find what? I have to find the value of K of P. Correct? So how to do that? There are various ways. Okay. You know, these the surface temperatures are given, boundary temperatures of the slabs. Okay, they are given. So I can write that Q, which is 10 kilowatts. So I can write 10 raised to the power 4 watts. Because ये watt में है ना? That is equal to 500 minus 360. करेक्ट? क्यों किया मैंने ये? आपको पता है, these are the surface, these are the temperatures, and in between there are 3 resistances of same material or different material. Let's see. So Q is equal to total driving force divided by the resistance. What is resistance? This 20 by L by KA, right? But this is in meter. This 20 has to be changed, right? So 20 into 10 to the power minus 3. L by K. What is K? 10 into A. Correct? It is given, right? No, it is not given. Not a problem. Okay, so plus this 1 into 10 to the power minus 3 divided by K. I don't know the value of K into same A, right? This is heat flux, right? I think it is heat flux. So in that case, this area won't be required. No need to write area. This area is there for rate. Okay, so heat flux is this 1 into 10 to the power minus 3 by K. Right, the third one will be 1 into 10 to the power minus 3. This one is 20 again. So 20 into 10 to the power minus 3. 20 into 10 to the power minus 3 and again divided by 10. L by K. ठीक है, एरिया लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फ्लक्स है, रेट नहीं है. ठीक है, so now if you see this answer, this will be 500 minus 360. 500 minus 360, right? 360, that is 140. So 10 to the power 4
is equal to 140, correct? And then आइए 10 power minus 3 को कॉमन लेते हैं, फिर इसको ऊपर भेज देते हैं, that becomes 10 power 3, okay? Then it is 20 by 10, that is 2 plus 1 by k, सॉल्व हो गया काफी मेरे ख्याल से, 2 है ना? So that becomes 4 plus 1 by k, this is 10 power 4, यहाँ से भी कैंसिल करते हैं, this is 10 is equal to 140 divided by 4 plus 1 by k, ठीक है? So that is 40 plus 10 by k is equal to 140. Options है क्या अपने पास? In this case, I don't think options are there. No, they're not there. Okay, fine. So 10 by k is equal to 140. So 10 by k is equal to 100, or k is equal to 0.1. Fine. In that case, k is equal to 0.1. What will be the unit? Watt per meter per Kelvin. Watt per meter per Kelvin. ठीक है? Whenever you have composite material, one thing always keep in your mind. Whenever you have composite materials, it means that the heat flux at steady state will be same at any location, at any point between any interface. ठीक है? Heat flux में कोई change नहीं आएगा, right? Of course, if there is a heat generation, then these things are not valid. Whatever we are discussing. In case there is no heat generation, it is just a sandwiched material, or in case 3 or 4 type of materials are there, everywhere heat flux will be same in series. अगर parallel में है, जैसा कि पहले करा, if parallel materials are there and k value is also different in that, and we are maintaining same temperature here, in that case heat flux will be different. In the sequence of the numerical problems, let us take the 12th problem. You can read the problem. It says a cylindrical यूरेनियम फ्यूल रॉड. तो न्यूक्लियर रॉड है, रॉड का शेप क्या होगा? सिलिंड्रिकल, ऑफ कोर्स. शायद लिखा भी है सिलिंड्रिकल ना? हाँ, सिलिंड्रिकल. अ सिलिंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रॉड, ठीक है? ऑफ कोर्स रॉड है तो ये सॉलिड होगा, होलो नहीं होगा. ऑफ रेडियस 5 mm. मैं हर बार हर प्रॉब्लम में बता रहा हूं, बी केयरफुल, इट इज रेडियस और डायमीटर. रेडियस इज 5 mm. In a nuclear reactor, I told you that nuclear reactions, during the nuclear reaction in the fuel rods also heat energy is generated. This was one of the 3 examples. Any a normal exothermic chemical reaction, a nuclear reaction, a resistance wire. ये 3 काफी common examples हैं जहां during the heat conduction, I mean heat is generated and then that is conducted. Okay, heat is generated at the rate of, so Qg is given to you. इतनी प्रॉब्लम्स करने के बाद ये जनरेशन वाली प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. मैंने जनरेशन वाली प्रॉब्लम्स पे थोड़ा खास फोकस किया है, अदरवाइज कंडक्शन में देखो कुछ खास नहीं है ना. वही कंपोजिट स्लैब, द फॉर्मूला ऑफ कंडक्शन ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री फॉर सॉलिड वॉल, फॉर सिलेंडर, फॉर स्फीयर्स, अदरवाइज कुछ खास है नहीं. तो जो भी कंफ्यूजन्स आती हैं, जो मिस्टेक्स आप करते हो, दैट इज आइदर यू डू दोज मिस्टेक्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन, right, or you do those mistakes in the problems of heat generation and conduction and convection. Okay, so Qg is 4 into 10 raised to the power 7 watt per meter cube. The rod is cooled by a liquid having convective heat transfer coefficient. So यहाँ पे कोई insulation नहीं है, directly there is liquid. So H infinity is very high. It is given as 1000 watt per meter square Kelvin. No problem with the units. Okay, at 25 degrees Celsius. T infinity is 25 degrees Celsius, correct? Okay. At steady state, the surface temperature of the rod. ये टेम्परेचर आपसे पूछा है. देखो, मैंने आपको जनरेशन की प्रॉब्लम्स में पहले भी बताया है कि आइदर यू विल बी हैविंग दीज टू, इनमें से कोई एक दिया होगा, कोई एक पूछा होगा, इनमें से कोई एक दिया होगा, कोई एक पूछा होगा, इनमें से कोई एक दिया होगा, कोई पूछा होगा. ओके, ऑफ कोर्स इन दिस केस T max आपको ना दिया है ना पूछा है. सो यू कैन रिलेट सरफेस टेम्परेचर एंड T infinity. कैसे रिलेट करवाया था मैंने? H into A, right? So Qg is given to, right? हाँ, H into A multiplied by Ts, which we want to find, minus 25, right? This is the heat conduction. Okay, and this must be equal to, at steady state, the heat conducted by heat convection. Sorry, this is heat convected. Heat convection in the medium must be equal to heat generated. भाई तभी स्टडी स्टेट आएगा. बट हीट कन्वेक्टेड
from the outer surface should be equal to heat generated in the entire body. And what is heat generated in the entire body? Don't write this. This has to be multiplied by the volume, right? So heat generated in the entire body is 4 into 10 power 7 multiplied by the volume. What is the volume? Pi into 5 into 10 power minus 3, right? Square into L. ठीक है क्या ये? Okay. That must be equal to H 1000. Some of you may ask, sir, this is in degree Celsius, this is in Kelvin. I told you that no need to change anything. 1000 into A. Area is surface area, so that is 2 pi into 5 into 10 power minus 3, that is R, and into L. ठीक है? Things will be cancelled. अच्छा, TS minus 25 भी आएगा साथ में, लिख देते हैं TS minus 25 डिग्री सेल्सियस. ये प्रॉब्लम्स आप काफ़ी सीख गए होंगे काफ़ी हद तक. कुछ ऑलमोस्ट एक ही जैसे सॉल्व करने के तरीके हैं इनके. ठीक है? सो यू कैन सी हियर दैट LL getting cancelled, right? Pi getting cancelled. 5 into 10 power minus 3 is getting cancelled here. So we are left with, this is 10 power 3, this is 10 power 7. So it will be 4. काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया है ना. So we have 4 into 10 power 4 into, अच्छा और चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे ना. 5 into 10 power minus 3, right? So only 10 will be there. 4 into 10 into 5 is equal to 2 into TS minus 25 degrees. So that becomes 40. 40 into 5 is 200. 200 by 2 is 100. And TS is coming out to be 125 degree Celsius. आपके पास जो टेम्परेचर पूछा है यहाँ पे, that temperature is in Kelvin. So 125 plus 273, that should be 125 plus 273, that should be 8, 9 and 3. ऑप्शन है क्या अपने पास? है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है? कहीं अब इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि यार किस टेम्परेचर को रिलेट किया. देखो मैंने यहाँ कन्वेक्शन की कंडीशन यूज की. कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू हीट जनरेशन. नोन इफ यू आर यूजिंग सपोज Tmax माइनस Tx इज इक्वल टू Qg R स्क्वायर बाई 4K. एक तो उस प्रॉब्लम में उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी? यू डोंट हैव द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी. एंड द सेकंड थिंग, व्हाई टू फाइंड Tmax एंड व्हाई टू वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग Tmax. करेक्ट है? देखो कंडक्शन में जो टिपिकल प्रॉब्लम बन सकती है, इट विल बी आइदर फ्रॉम दिस जनरेशन पार्ट. काफ़ी कुछ और पूछा जा सकता है जो अब तक नहीं पूछा गया. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉल्व वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन solid slab conduction with heat generation where the two sides of the wall slab were maintained at different temperatures. वहाँ पे कई सारी चीज़ें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, MSQ के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं. ठीक है? तो that was another good problem. That was 12th problem. These problems I'm taking from GATE. This one particularly. Let us solve the 13th problem. Initially, I was planning to solve 14 problems, but then I removed one of the problem because that was exactly a replica. I mean, only the data was different from the unsteady state heat transfer topic. तो उसको मैंने remove कर दिया and therefore we are having only 13 question now. Okay, so 13 question it says, for the composite wall shown below, the steady state surface temperature. Okay, case 1 and case 2 are there. This is again very good question from GATE Chemical Engineering. For the composite wall shown below, case 1, the steady state interface temperature is 180 degrees Celsius. Okay, we have a composite wall. Details इसकी given है. ठीक है? The steady state interface temperature is 180 degrees Celsius. Okay, this is 180 degrees Celsius. This is case 1. Okay, and this is one dimensional conduction. Okay, let's see. और कोई डेटा नहीं दिया इसमें. We have two layers. This layer is layer P and this layer is layer Q. It is given that this layer is having the length L. अच्छा, बाउंड्री टेम्परेचर जो है वो भी गिवन है आपके पास. दिस इज गिवन एज, थोड़ा सा मुझे इसको जूम करने दो, है ना. आई एम नॉट एबल टू. ओके, let's see what it is given. Yeah, it is given as 520 degrees Celsius. Okay, I hope आप problems को देख पा रहे हो. 500 degrees Celsius is this surface and 20 degrees Celsius is this surface.
ये सिनेरियो दिया हुआ है, दिस इज केस 1। और कुछ दिया हुआ क्या? नहीं, दिस इज लेयर P, दिस इज लेयर Q। Q की जो थिकनेस है वो कितनी है, दैट इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज केस 1। ओके, ऑल द टर्मिनल टेम्परेचर्स आर नोन, दिस L is known, fine. What they are saying that in case 2, if the thickness of layer P is doubled, then the rate of heat transfer is reduced by। इन्होंने कहा कि केस 2 में क्या करेंगे हम, in case 2 we will double the thickness of layer P keeping the terminal temperature same। ये लेयर P की जो थिकनेस है वो डबल कर देंगे, तो थोड़ा सा डबल सा बना भी देते हैं, लेट्स इट शुड सीम्स लाइक इट इज डबल। सो नाउ द लेंथ विल बी 2L, दिस इज लेयर P। ओके, टर्मिनल टेम्परेचर सेम है। कुछ बच्चे यहाँ का टेम्परेचर 180 लिख देंगे, ऑब्वियसली चीज है। देखो अगर आपने, देखो होगा क्या, टर्मिनल टेम्परेचर सेम रखा है, आप बोलोगे सर कि थिकनेस बढ़ा दी तो टर्मिनल टेम्परेचर सेम रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, यू हैव। तो अगर ऑब्वियसली चीज है, इससे पहले भी मैंने बताया, देखो अगर टर्मिनल टेम्परेचर सेम होगा देन ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर हीट फ्लक्स विल बी डिफरेंट, राइट। सो अगर हीट फ्लक्स सेम रखोगे देन टर्मिनल टेम्परेचर विल बी डिफरेंट, दोनों में से कोई एक डिफरेंट होगा। सो वी कैन हैव different heat flux for the same terminal temperatures, which is this case, I mean in this problem this is given, or we can have different heat flux for the same terminal temperatures if the thickness is changed। होगा क्या, जब आपने thickness, देखो P की thickness को डबल कर दिया, इसमें कुछ बातें मैं बता दूं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कुछ बातें अपने आप। they think that sir P thickness is getting doubled, we are also doubling the thickness of Q। first of all, no information about Q is given in the problem, so don't assume anything on your own। Q की थिकनेस को किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा रहा, ठीक है। द सेकेंड थिंग, मेनी टाइम्स स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे से कि सर टर्मिनल टेम्परेचर्स आर सेम, फाइन, दिस इंटरफेस टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी 180 डिग्री सेल्सियस। डोंट assume anything on your own, okay। So the question is, they are saying, yeah, the question says that if the thickness of the layer P is doubled, then what is then the rate of heat transfer is reduced by how much percentage। of course आपको ये बताना है reduction in rate of heat transfer when you do this। this is a very good problem, reduction in rate of heat transfer। इसको थोड़ा सा ट्राई करो। देखो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नया नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज अ composite wall। you know that in composite wall what happens, that at steady state, it is steady state one dimensional heat conduction। देखो in heat transfer problem, if they are not asking anything with respect to time, always assume it to be steady state। don't wait for them to write steady state in the problem, you won't find everywhere steady state should be written, right। देखो एक एटीट्यूड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, right। even in our test series we have tried deliberately, we have tried to put 1 or 2 question in the test, जहां पे स्टूडेंट को लगेगा यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज क्यों नहीं है, बट यू शुड ऑल्सो हैव एन एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विथ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। सही या गलत पे तो बाद में बहस होती रहेगी, वेदर द डेटा वाज सफिशिएंट इन द प्रॉब्लम और नॉट, यू कैन डिस्कस ऑन दोस टॉपिक फॉर मंथ्स आफ्टर द गेट एग्जाम, बट व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द गेट एग्जाम, देखो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन व्हेन यू आर राइट द IIT डू नॉट रिस्पॉन्ड, समटाइम्स वो उसको चेंज नहीं करते, बोनस नहीं करते। आई डोंट नो कि वो किस क्वेश्चन को बोनस करेंगे, किस क्वेश्चन को बोनस नहीं करेंगे, आई डोंट नो। आप सपोज ड्यूरिंग द एग्जाम यू आर थिंकिंग कि सर अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट यू टॉट अस, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, राइट। बट यू नो आई एम नॉट द अथॉरिटी, यू आर नॉट द अथॉरिटी। इफ दे डिसाइड दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक द क्वेश्चन बोनस, तो आपके नंबर गए, तो आप ये सोच के मत आओ कि सर ये क्वेश्चन पेपर में गलत है मैं नहीं करूंगा। उस समय इन द मीन टाइम whatever you are feeling with the provided data in the question, in the meantime attempt the question, don't assume that it will become bonus later, है ना, right। it is possible, it happens, sometimes it has happened। आपके कॉन्सेप्ट सही होते हैं उस समय, इवन आपने क्वेश्चन को चैलेंज किया, यू फील कि सर दिस पर्टिकुलर थिंग वाज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो इवन अ पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस and can get a different answer sometimes। on this basis you challenge the problem, but sometimes the problem, that challenge is not accepted, you can't do anything, right। तो पेपर में लिमिटेड डेटा भी अगर है, you have to understand कि कैसे सॉल्व करना उसको।
हम पेपर सॉल्व करने के लिए आए, क्वेश्चन को सही या गलत साबित करने पेपर में नहीं जा रहे, ठीक है। अगर वो साबित करना है तो करते रहो, ठीक है। ओके, सो डोंट अज्यूम एनीथिंग ऑन योर ओन. We have to find reduction in rate of heat transfer. You know, there is only one concept, that whenever there is composite heat, composite bodies, in this case, this is case 1, in this case the heat transfer rate will be Q1, right? Hoga, and everywhere it will be Q1 because it is steady state, no heat generation, nothing. Okay, what do you think in this, the heat transfer rate should change or not? Definitely, because thickness बढ़ गई है. What happens on increasing if the delta T is same, on increasing the thickness you are increasing the resistance, so it is Q2, and definitely Q2 will be less than Q1. तो वहीं आपसे पूछा परसेंट रिडक्शन. अच्छा देखो, परसेंट रिडक्शन होता क्या है? Q1 माइनस Q2, दिस इज द रिडक्शन. भाई कितना चेंज आ गया? आप Q2 माइनस Q1 नहीं करोगे ना, नेगेटिव आएगा. Q1 माइनस Q2, कोई आंसर, कोई ऑप्शन भी नेगेटिव नहीं है, नहीं होता है जनरली. परसेंट रिडक्शन पूछा है, रिडक्शन वर्ड का ऑलरेडी यूज कर लिया, तो नेगेटिव यूज करने का जरूरत नहीं है. अच्छा, डिवाइड किससे करें? Q2 या Q1 से? डिवाइड हमेशा इनिशियल से किया जाता है. परसेंट चेंज इज ऑलवेज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, सो इट शुड बी Q1. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड. अब सवाल ये है कि Q1 और Q2 कितना कितना होगा. वंस यू फाइंड Q1 और Q2, और यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, योर आंसर इज डन. ओके, so कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में, whenever you have two types of cases given in a problem, what is the approach? You take first case, use the given data, find something, कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Take the first case, use the given data, find something, apply the same thing in the second case, क्योंकि of course the materials are same, right? Fine. You can observe here that thermal conductivities are not given. Okay, let's see. Okay, so we have to find this. Okay, I'll come to this point. तो पहले ये पता होना चाहिए कि या डेफिनेटली हीट विल बी रिड्यूस्ड. कई बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं कि सर ये टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था क्योंकि थिकनेस बढ़ा दी हमने, तो हीट फ्लक्स घट गया तो टेम्परेचर चेंज होगा. भाई थिकनेस बढ़ने पे हीट फ्लक्स घटता है, ये तो आप तभी बोल सकते हो ना when delta T is constant, right? Q is inversely proportional to resistance only if delta T is constant. तो आप कहते हो कि सर Q घट गया था तो ये बदल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. दोनों को कैसे बदल रहे हो? ओके, सो let us take this case, consider this case. In case 1, because I am considering this case because in this case more data is given to you. So I can write that Q1 is equal to 500 minus 200. I'm taking the terminal differences. So I should take all the resistances, L by K. एरिया कांस्टेंट होगा सभी में, एरिया की बातें नहीं करिए, है ना. एरिया इन दिस डायरेक्शन, दिस इज Q2, इन दिस डायरेक्शन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, सो एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला है. दिस इज L बाय, सपोज आई एम हैविंग Kp, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल P, प्लस व्हाट इज दिस, इज इट गिवन थिकनेस ऑफ लेयर Q? थिकनेस ऑफ लेयर Q इज नॉट गिवन. ओके, फाइन. सो दिस इज Lp बाय Kp, इसको तो L ले लेते हैं, है ना. एंड दिस इज LQ, आई डोंट नो व्हाट इज LQ, बाय KQ. फाइन, दैट इज द सिचुएशन. एंड यू नो दैट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 500 minus 180. आई एम टेकिंग दिस डिफरेंस, सो इट शुड बी L by KP. ये बराबर होने चाहिए ना. ऑफ कोर्स एट स्टेडी स्टेट दिस शुड बी सेम. ओके, दिस शुड बी 20, सॉरी. और यू कैन ऑल्सो टेक 180 minus 20, not a problem. So this will be 500 minus 20 will be 480 divided by L by Kp plus LQ by KQ, right? This the thickness of layer Q is not changed in any of this case. तो ये जो Q की thickness है वो पहले जैसी है, ठीक है. Okay, that should be equal to 500 minus 180, that becomes 320 divided by L by Kp. यहां से कुछ रिलेशन निकलेगा, राइट? कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा. लेट्स सी व्हाट रिलेशन वी आर गेटिंग. सो 4 12 times and 4 8 times. So, or you can say that, okay, so fine. This is 4 8 and 12, right? Or you can say this is 6 and 4 or 3.
this will be 6 and 4 and this will be 3 and 2. So ultimately I am having this relation from the case 1, 3 by L by Kp plus Lq by Kq is equal to 2 by L by Kp. Correct? That is the situation we have. यहाँ से देखो आप कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो. Okay. Okay, from this equation we have 3L by Kp is equal to 2L by Kp plus 2Lq by Kq, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 3L by Kp minus 2L by Kp, that becomes L by Kp is equal to twice of, I think I'm correct, right? Yeah, twice of Lq by Kq. Right? This is the relation. ठीक है? This is the relation. So, okay, we have this relation. यही relation find करने के लिए आपको पहली केस में जो डिटेल्स दी थी, ठीक है, सो मैं ऊपर जो लिखा उसको इरेज कर रहा हूँ. ओके, देयर कैन बी वेरियस अदर वेज, है ना, टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. यू कैन अप्लाई योर ब्रेन. एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं अप्लाई करना है, बस कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलना है. ठीक है. ओके, दैट इज द रिलेशन बिटवीन L by Kp and Lq by Kq. You can say that this, what was L by Kp? L by Kp was resistance of this, and this was the resistance. Twice of Lq by Kq was the resistance of this layer. है ना? So I can say that the resistance of this is double of the resistance of this. Okay. So okay, fine. So I can say that Q1 is equal to, Q1 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 500 minus 20 divided by L by Kp. तो L by Kp को मैं ऐसा लिख दूं, twice of Lq by Kq, एंड प्लस यहाँ पे क्या रखा था? Lq by Kq. कोई दिक्कत? That becomes thrice of Lq by Kq. Correct? So, and in the second case, that is one relation. Okay. So I can write this relation as Qi is equal to 500 minus 20 divided by thrice of Lq by Kq. Correct? Q2. Let's talk about Q2. In Q2, we have increased this layer. We have increased the layer. Okay. So that Q2 becomes 500 minus 20. अबे देखो इंटरफेस का टेम्परेचर नहीं दिया, so why to waste a time to calculate the interface temperature? However, you can do that. You can calculate the interface temperature. 500 minus 20 divided by 2L by Kp. भाई ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन तो सेम रहेगा ना, L by 2L by Kp, okay, plus Lq by Kq. And what is the relation? L by Kp is twice of Lq by Kq. So this will become 4 times of Lq by Kq. So Q2 will be 500 minus 20 divided by 4 and plus 1. So 5 Lq by Kq. ठीक है क्या? Lp by Kp twice. Okay. Okay. So 5 times of Lq by Kq. आप रिलेशन देख सकते हैं between Q1 and Q2. ठीक है. So what we want percent reduction in heat loss. So Q1 minus Q2 divided by Q1 into 100. ठीक है. ये कोई भी क्वेश्चन में देख के नहीं आता सॉल्व करने के लिए, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ. इसलिए आप देखते हो कई बार मतलब बोर्ड पे भी मेरे से कई बार मिस्टेक होती है. द रीजन इज मैं कोई भी क्वेश्चन याद करके नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है, एंड दैट शुड बी योर एटीट्यूड ऑल्सो. मैंने आपको ये बताया ना कि इन कॉम्पोजिट वॉल्स देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट हीट ट्रांसफर हैज टू बी सेम, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हैज टू बी सेम एवरीवेयर इफ देयर इज नो हीट जनरेशन. मुझे पता है कि इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो वहीं से जो भी बनेगा वहीं से बनेगा. इसलिए कई बार आप देखते हो कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कई बार मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. यू में से कि सर मैं तो इसको शायद 2 स्टेप कम में कर देता. यस पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस यू हैव टू एक्सप्लोर. मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एंड दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग. नेवर रिमेंबर द क्वेश्चन. आप फिर से जब इसको सॉल्व करोगे, फिर से जब इसको ट्राई करोगे, बस सीधा सॉल्व करना शुरू कर दो. डोंट टर्न द पेजेस ऑफ योर नोट्स. राइट. मैंने पहले ही कहा कि कभी भी रिवीजन में नोट्स मत देखा करो, कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मत देखा करो. आस्क योरसेल्फ, यू हैव दिस कॉन्सेप्ट हिडन समवेयर इन योर अनकॉन्शियस माइंड, राइट? सबकॉन्शियस माइंड, सर अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड. तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वहां से निकल के आएगा जरूर. ठीक है. दैट बिकम्स 1 minus Q2 by Q1. सो 1 minus Q2 by Q1 into 100. सो Q2 क्या है? 500 by this, एंड Q1 क्या है? सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 by this divided by, so that becomes 3 Lq by Kq. भाई ऊपर चला जाएगा ना, ध्यान रखना.
And 5 LQ by KQ. I think okay. So 1 minus 3 by 5 कितना होता है into 100? 5 3 0.6, 1 minus 0.6. कई लोग इसका आंसर 50% निकालते हैं. जो मेन कंफ्यूजन होती है वो 50 और 40% में ही होती है. आप लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हो उसकी वजह से. You can also try to calculate the interface temperature in this case. That is an additional problem in the same question. आप चाहो तो इसका इंटरफेस टेम्परेचर कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो. व्हाट डू यू थिंक? दिस इंटरफेस इन दिस केस सी द स्टडी स्टेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड. 500 तो यहाँ पर है बट रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? व्हाट डू यू नो सी K इज सेम. आपने K को तो सेम रखा है, बस आपने थिकनेस बढ़ा दी है. ठीक है, कंडक्टिविटी इज सेम. तो यहाँ पे सपोज 500 से आप स्टार्ट कर रहे हो, देयर विल बी अ लाइन. सपोज दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाइल एंड गोज टू 180. If you are increasing the thickness, what is the slope of this line? The slope of this line depends upon thermal conductivity, not on the thickness. So if the thermal conductivity is same, the line will be still parallel. But now you have more space, more distance is there. So the drop will be more than 180. So of course, this temperature will be less than 180. तो इतना तो comment मैं कर सकता हूँ. Now it's up to you if you want to find this temperature. You can verify by various ways. Right? This was one way of solving the problem. 40%. आप कुछ छोटे मेथड्स भी सोच सकते हो. However, I know that those methods won't be too much short. एक दो स्टेप आप कहीं कम कर लोगे. So I'm explaining. I have to explain each and every part of this problem solving. These were 13 selected problems based on conduction, and I hope that all of them were helpful for explaining the concept of conduction.